how exactly to handle. Rohit, see, the thing here is that we have many customers, okay, who could have a database, right? Who might not have a database, who could or could not have a database solution, right? But we are giving the complete tally extract in JSON format क्योंकि हमने whatever has been in our Power BI and the SQL code we have converted into Python and we are now able to give them in say JSON format. For example, like this, right? So every customer who uses that Python executable will get something like this C colon sample company. Like this is my expense detail, this is my this thing, right? Now I'm extending your idea which you had done in the prior project that how can I use this particular expense JSON to make my custom dashboards? Is that clear? So for that I will use the chat GPT. ये तुम्हें समझ आया बेटा कि नहीं आया? Correct. So now what I do is as a first step जो भी ये JSON file है I open say expense.json, right? And I pick it up a certain set of data from here because entire JSON तो वो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा डेटा होगा तो वो नहीं करेगा. Correct. Or you can try it out. What you can do is क्योंकि वो उल्टा सीधा दे देता है, right? So you pick up this expense JSON, ठीक है? You pick this up and pick it up to here. कहाँ से पता लगाना पड़ेगा? Expense JSON is current asset group यहाँ तक ले लो. Clear? Now go down to ChatGPT here. ठीक है. Now there's a certain prompt which we have picked up. तो ये prompt किसी और ने बनाया था. So I've picked it up from a YouTube video, right? And you say prompt now. I want you to create a this thing. तो अभी इधर जो है ना ये मैंने Control C और Control V किया. Now you give this to Python. ये. अब I want you to create an interactive expense analysis dashboard. ठीक है. यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस ये मैंने इसको डाल दिया. ठीक है ना. आई नीड टू लोड द एक्सपेंस डेटा. तो क्योंकि मैं एक्सपेंस डेटा जो है फ्रॉम माई लोकल प्रोवाइड दिस इज एन HTML डाउनलोडेबल फाइल मेरे को चाहिए. prompt the dashboard you create a glass moffer, right? Okay, with a live using HTML and JavaScript. The dashboard should have month by year month, then yearly net movement analysis. Filtration should be by company names. ठीक है ना. अभी के लिए मैं इतना सिंपल से बना देता हूँ बट यू कैन कीप ऑन एडिंग द स्पेक्स हियर. And now what you do is you ask ChatGPT to generate this. Okay. So what it will do is it will give you a template of how the dashboard is going to come. Now I'm just telling you how exactly this is an idea. So can we give everyone their custom app? You know?
कि वो अपने कस्टम डैशबोर्ड्स जो है वो अपने अपने हिसाब से बना ले, क्योंकि हम तो जेसन का तो वे डेटा दे ही रहे हैं ना पूरा का पूरा। ये समझ आया बेटा कि नहीं आया? The second thing here is that within Excel now, beta, if we go down to home and if we go down to add-ins, so within add-ins you can add Anthropic also. यहाँ पे नहीं हो रहा पर एक्चुअली में हो सकता है, ठीक है ना? यू कैन ऐड add-in थॉट फॉर 10 7 seconds एनालाइज वो करके देगा आप। ये एकदम ही मतलब कोडलेस सा हो जाएगा, इट विल कम एंड डू इट। तो ये जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट जो है इसको यूज करना है। तो ये प्रॉम्प्ट हम लोग जो है लेकर के ये तुमको यूज करके जो है तुम बना सकते हो डैशबोर्ड। एक सेकेंड, इस तरीके का डैशबोर्ड बनेगा। ये देखो ये डाउनलोड है ना, ये सेल्स डैशबोर्ड बन गया इनका। ये लोकल मशीन पे चल रहा है। सो व्हेन आई पिक अप दिस फाइल लोकल एंड आई पिक अप दिस रेवेन्यू डॉट जेसन, ये ऑटोमेटिकली एनालिसिस करके ये अलग अलग इन तरीके के डैशबोर्ड बना रहा है एचटीएमएल में। तो समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? So basically, it means that based on this revenue.json, then you don't really need the Power BI development also, no? And this can be posted immediately. This JSON HTML file can be posted immediately into the Python file also, ना? जिससे कि वेब ऐप होस्टिंग होती है। नहीं आ रहा है समझ में? बेटा बताओ ना, यू आर द मास्टर इन दिस ना। 100% करेगा, क्योंकि नाउ वी आर लोडिंग द, यही तो हमारी प्रॉब्लम हो रही थी ना, हमें वो पता नहीं लग रहा था कि दैट हाउ लेट हैंडल द लार्ज डेटा। ये तो फाइल यहाँ से लोड कर रहा है ना पूरा का पूरा। ये क्या चैट जीपीटी बैठा दिया गया मैंने? बना के दे देगा तुम्हें कुछ देर में। अब प्रॉब्लम क्या है? वो तुम्हें एचटीएमएल फाइल